Welcome back to our lecture series of complex analysis. In this lecture, we will study zeros and singularities of trigonometric functions, and then we will see trigonometric mappings. First of all, let me tell you what do you mean by zeros, and then we will come to the concept of singularities. So, the first definition is of zeros, and this definition is about zero. So, a zero of a function f is a complex number z naught such that we have that x f of z naught is equal to 0. इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो फंक्शन को ज़ीरो बनाते हैं वही हमारे फंक्शन के लिए ज़ीरोज़ होंगे. ओके, नाउ वी हैव अ डिस्कशन दैट अगर हम फंक्शन के डोमेन ऑफ डेफिनेशन को एनलार्ज कर दें तो उस केस में इट मे बी पॉसिबल कि फंक्शन के पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बढ़ जाए. जैसे फॉर एग्जांपल, let me write first this line and then we will write the example. Okay, so we have this discussion that it is possible that a function of a real variable can have more zeros when the domain of definition when the domain of definition is enlarged. Okay, this is for example, if I say f of x is equal to x square plus 1, where this x is in R, that is this function is a real function, then there does not exist any zero of एफ राइट. अगर हम रियल की ही बात करेंगे तो रियल नंबर सिस्टम में ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ज़ीरो बनाए. ओके, यू कैन सी जब हम x की जगह ज़ीरो पुट करेंगे हमें 1 मिलेगा और इसके अलावा जो भी वैल्यू हम x की जगह पुट करेंगे दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव प्लस 1 इज ऑलरेडी पॉजिटिव. तो ये वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं बनेगी किसी भी x वैल्यू के लिए. बट if we consider the same function for the complex variable, then but if we consider f of z equals to z square plus 1, then z is equals to plus iota and z equals to minus iota are two zeros of f. That is, अगर हम अब डोमेन ऑफ डेफिनेशन को एनलार्ज कर दें, यहाँ पर हमारे लिए डोमेन ऑफ डेफिनेशन था रियल नंबर सिस्टम और यहाँ पर हमारे लिए डोमेन ऑफ डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. तो अगर हम डोमेन ऑफ डेफिनेशन को बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो उस केस में ऐसा पॉसिबल है कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन के पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बढ़ जाए. जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं 0 और यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं 2. ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से. ना हमारा जो कंसर्न है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में है. सो वी वांट टू आइडेंटिफाई द ज़ीरोज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट द साइन जेड. ओके, रियल नंबर सिस्टम में हमें पता है इफ़ वी कंसीडर द साइन फंक्शन then we have this kind of scenario that this kind of sine function we have, राइट. और जहाँ जब जब ये इस एक्स एक्सिस को मिलता है दीज आर दी जीरोज फॉर साइन फंक्शन. ओके, सो यू कैन से इफ दिस इज जीरो, सपोज दिस इज आर जीरो, दिस इज पाई, this is 2 pi, this is 3 pi, and likewise this is minus pi, this is minus
2 पाई एंड सो ऑन। तो ये सभी वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा साइन फंक्शन 0 हो रहा है, ठीक है? और जब कोई भी फंक्शन किन्हीं वैल्यूज़ पे 0 वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है, तो उन सारी वैल्यूज़ को हम 0 बोलते हैं। तो बेसिकली इन रियल नंबर सिस्टम sin x के लिए 0, पाई, 2 पाई और आई मस्ट से 0 प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, ये सभी वैल्यूज sin x के लिए 0 को रिप्रेजेंट करती है। नाउ अ फैमिलियर क्वेश्चन फॉर अस इज दैट क्या sin z के लिए भी इसी तरीके के 0 मिलेंगे, या फिर जैसे ही हमने डोमेन ऑफ डेफिनेशन को एक्सटेंड किया है तो इसके अलावा भी कोई जीरोस हो सकते हैं? ये बात हुई साइन जेड के बारे में। अगर हम कोस जेड के बारे में सोचे तो हमें पता है पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इस तरीके के जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे वो कोस जेड के लिए जीरोस का काम करते हैं, ठीक है? नाउ द सेम क्वेश्चन फॉर कोस जेड ऑल्सो। सो कैन बी आस्क कि कोस जेड का जब हम कोस एक्स का जब डोमेन ऑफ डेफिनेशन एक्सटेंड करके कोस जेड बनाते हैं तो उस केस में क्या कोस जेड के पास जो रियल सिनेरियो में जीरोस थे उसके अलावा भी जीरोस अवेलेबल हैं? सो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जीरोस आइडेंटिफाई करते वक्त इन्हीं दो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सो लेट मी रिकॉल सम पॉइंट्स एंड देन वी विल कम टू द concept of zeros of complex cosine, sine and the other trigonometric functions. Okay, so recall that first of all we have that the zeros of real sine functions occurs at integer multiples of pi, right? These are the integer multiple of pi, plus minus 1, plus minus 2 and so on. Then second, अगर हम सेम काइंड ऑफ स्टेटमेंट कोस के लिए डिस्कस करना चाहे तो वी कैन से the zeros of real cosine function occurs at the odd integer multiples of pi by 2, like plus minus pi by 2, plus minus 3 pi by 2 odd integer multiply, okay, plus minus 5 pi by 2 and so on, ये सभी cos z के लिए जीरोस रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि द कॉम्प्लेक्स साइन एंड कोसाइन फंक्शंस को जब हम रियल पर रेस्ट्रिक्ट करें तो उस केस में साइन जेड एंड कोसाइन जेड विल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रियल साइन एंड कोसाइन फंक्शन, okay? So what we have that when we restrict z to be real, then cos z is equals to cos x and sin z is equals to sin x, right? That is, you can say that is the complex sine and cosine functions agree with real sine and cosine functions for
real input. ओके, तो जब हम इन z की जगह केवल रियल इनपुट दें तो z cos z will be same as the cos x and sin z will be same as the sin x. अब हम ये कह रहे हैं कि जब हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो ये रियल जैसा बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब जो जो जीरोस cos x और sin x के पास थे वो जीरोस cos z और sin z के पास तो होंगे ही। नाउ आवर क्वेश्चन इज क्या इनके अलावा भी कोई क्वेश्चंस कोई जीरोस हैं इसके पास? तो व्हाट कैन आई से? सो वी कैन say that what we can say the zeros of real sine and cosine functions are zeros of complex sine and cosine functions respectively. ठीक है, नाउ वी हैव अ नेचुरल क्वेश्चन दैट इज क्या इनके अलावा भी हमारे पास और जीरोस हैं? सो वी हैव दिस क्वेश्चन दैट whether the complex sine and cosine functions have any other zeros. This is the question for us. Okay, any other, I must write here additional zeros. Okay, additional zeros apart from these real zeros, क्या इसके पास और भी zeros हैं क्या? ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर को लिखते वक्त वी विल हैव द zeros of sine and cosine functions, and the moment we have the zeros of sine and cosine functions then we can discuss the zeros of other trigonometric functions also. ठीक है, so let us discuss this point. First of all, we know from the previous section that the modulus value of sin z is in form of the sine function, cos function and their hyperbolic, right? So we have this scenario that we know that the modulus value of sin z, that is equals to the square root of sine square x plus sine hyperbolic y. Okay, so if we say that sin z is 0 at somewhere, तो हमें पता करना है कि कौन से ऐसे जीरोस, कौन से ऐसे z की वैल्यूज हैं जो कि sin z को 0 बनाती है और वही वैल्यू sin z के लिए जीरोस का काम करेगी. ठीक है, नाउ वी want to find those z such that sin z is equals to 0. Suppose this is our equation number 1, this is our equation number 2. Now in equation number 2, अगर हम इस पर्टिकुलर sin z इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर इसकी मॉडुलस वैल्यू भी 0 हो जाएगी. ठीक है, देन फ्रॉम 1 we can write this square root will be equals to 0 and then we have sine square x plus sine hyperbolic square y is equals to 0. ओके, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस वैल्यू तब ही 0 होता है जब वो खुद 0 हो, राइट? तो हमने वही वैल्यू लिखी है. नाउ क्योंकि यहाँ पर x एक रियल नंबर है तो साइन स्क्वायर हमें एक रियल क्वांटिटी देगा. साइन हाइपरबोलिक एक रियल फंक्शन है तो क्योंकि y रियल है तो इसलिए साइन स्क्वायर y एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा.
और आई में से नॉन नेगेटिव क्वांटिटी देगा। तो हम ये कह रहे हैं कि किन्हीं भी दो नंबर का स्क्वायर का एडिशन तभी ज़ीरो पॉसिबल है जब वो दोनों ही ज़ीरो के इक्वल हो। अगर दोनों में से एक भी नॉन ज़ीरो हुआ तो ये सम कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं बनेगा, राइट? सो व्हाट आई कैन से, this implies that we have sine square x is equals to 0 and we must have sine hyperbolic square y is also equals to 0. Now हमें पता है sin square x 0 कब होगा, जब sin x 0 होगा, right? This implies that sin x is equals to 0 and this implies that x is equals to n pi where n is integer, right? sin x केवल पाई के पाई के इंटीजर मल्टीपल पर ही जीरो होता है। नाउ कम टू दिस पार्ट, साइन हाइपरबोलिक y का ग्राफ हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया ही था। लेट मी ड्रॉ वंस मोर टाइम। सो वी हैव दिस ग्राफ ऑफ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, right? This is the graph. Let me write that. Okay, this is the graph of sine hyperbolic function, sine hyperbolic y. अब हमें पता है ये केवल एक ही पॉइंट पे जीरो होता है और वो वैल्यू क्या है, जीरो। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ दिस y इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू है, अगर y की वैल्यू है, तो क्या हम z की वैल्यू लिख सकते हैं? देन द z विल बी इक्वल्स टू x plus iota y and that is equals to n pi plus iota 0, that is the 0 only. Okay, so you can see कि sin z भी केवल n पाई पर ही जीरो है, बाकी किसी भी नंबर पर जीरो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर जीरो नहीं बन रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि साइन z भी जीरो तब ही है जब z इक्वल्स टू n पाई है। और सिमिलरली अगर हम कोस के लिए भी लिखेंगे, similarly, if I want to discuss for the cos function, let me write this as 3. Okay, similarly, for cosine function, we can write cos z is equals to 0 if and only if modulus value of cos z is equals to 0, and we know the modulus value of cos z, that is, this implies that cos square x plus sine hyperbolic square y is equals to 0. Again we have the same scenario, और यहाँ से क्या implies होता है, this implies that cos square x is equals to 0 and the same time sine hyperbolic square has to be equals to 0, right? Now this equation defines that cos x is equals to 0 and cos x कब 0 होगा, when this x is equals to the odd multiple of pi by 2. So I can write this x is equals to 2n plus 1 टाइम पाई बाई टू, वेयर दिस एन इज कमिंग फ्रॉम z। तो ये हो गए ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। दिस इज फ्रॉम द रियल सिनेरियो। ओके, यहाँ पर x क्या रियल वेरिएबल है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस जीरोस। एंड अगेन साइन हाइपरबोलिक y जीरो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ दैट y इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, देन again we have that z is equals to 2n plus 1 pi by 2 and then plus 0, okay, where this n is coming from z। तो कोस और साइन अपने रियल सिनेरियो के जैसे ही बिहेव कर रहे हैं। सो वी कैन कंक्लूड कि जो जीरोस रियल नंबर सिस्टम में साइन एक्स और कोस एक्स के पास है, सेम जीरोस विल हैव बाय साइन and sin z and the cosine z in complex number system. Okay, so thus we can say, thus you can write like sin z is equals to 0 if and only if we have that z is equals to n pi, where n is in z, and you can write cos z is equals to 0 if and only
if z is equals to 2n plus 1 pi by 2, again this n is coming from z, right? So we have this conclusion, and the moment we have the answer for our question, we have obtained the zeros for sine and cosine function in complex space. Okay, so this is about the zeros of sine function and cosine function.